Hi everyone. In today's video, I will answer some of the queries or comments that I have received on my initial video of Nexon XZ Petrol 6 months ownership review according to my overall experience with my car. I'll be covering two aspects in today's video. First one is regarding the engine sound or vibration query, and second would be about the mileage aspect of my Nexon XZ Petrol car. If I talk about the engine sound or vibration, since Nexon has a 3-cylinder engine, the engine sound or vibration is obviously bit on the higher side if you compare it with any 4-cylinder engine cars. You might feel it if you are driving a 4-cylinder engine car earlier, but if this is the first car of yours, I guess you will not feel it at all post switching on the AC and music system. From my perspective, the engine sound and vibration is negligible. Only one point to consider is to not drive your Nexon vehicle in eco mode for prolonged time and suddenly change to sports mode. In those cases, the engine sound and vibrations will increase, and I have mentioned the same in my earlier videos as well. Now talking about the mileage, as you can see that I have driven this car for 3608 kilometers as of today, and the MMID is showing a mileage of 14.9 kmpl. Earlier, most of my travels were on highways and I was getting a mileage of 15.7 kmpl according to the MMID till few days back. But recently, all my travels have been local travels, mostly owing to the partial lockdown in Bangalore. I'm going out to get mostly groceries or other stuff from stores. So I assume the number that is being shown in the MMID as 14.9 kmpl is not exactly correct, and I think overall I'm getting somewhere around 14 kilometers per liter from my Nexon petrol variant car. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इंजन के साउंड और वाइब्रेशन की बात करें तो वे काफ़ी नेग्लिजिबल है। अगर ये आपकी पहली कार है तो आपको ये साउंड और वाइब्रेशन तो फील होगी ही नहीं। हाँ, अगर आप इको मोड में लगातार गाड़ी को चलाते रहेंगे और सडनली इसको आप स्पोर्ट्स मोड में डाल देंगे तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है इंजन के वाइब्रेशन और साउंड से, बट उसके अलावा कोई साउंड और वाइब्रेशन की इशू नहीं है इस कार में एज सच। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा MMID आज के टाइम में 14.9 kmpl का माइलेज दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से वो करेक्ट नहीं है। ये समवेयर अराउंड 14 किलोमीटर्स का माइलेज मुझे दे रही है पूरा ट्रैवल करने के बाद, हाईवेज और लोकल हर जगह गाड़ी को चलाने के बाद 14 किलोमीटर पर लीटर वुड बी द माइलेज जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे मिल रही है आज के डेट में, और ये ठीक ठाक माइलेज है मेरे हिसाब से। मेरी कार की दूसरी सर्विसिंग हो चुकी है और आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने अगर नई नेक्सॉन ली है कि आपके गाड़ी की माइलेज सेकंड सर्विस के बाद से ही बढ़ेगी। पहले सर्विसिंग के बाद तक भी उतनी खास आपको माइलेज मिलेगी नहीं, वो आपको 10-12 किलोमीटर के आसपास माइलेज मिलेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे ये पिकअप करेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है पेट्रोल लेने की और परफॉर्मेंस देने की जो कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब आप एक सर्विस दो सर्विस कराएंगे उसके बाद वो धीरे धीरे पिकअप करेगी, तो आपको एक टाइम के बाद वो 15 किलोमीटर के आसपास के माइलेज तो ज़रूर ही देगी ये कार। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हाँ अभी तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं एक साल कंप्लीट करने के बाद जब तीसरा सर्विस कराऊंगा उसके बाद भी शायद मैं एक और रिव्यू निकालूँ और उसमें मैं बता पाऊंगा कि माइलेज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।